किसी मौके पे लगा ऐसा कि बस ये टाई अब हाथ से निकला और हाथ से निकला और फिर डिसअपॉइंटमेंट, और फिर क्योंकि आप जब व्हेन यू लूज़ इन अ डेविस का मैच, जब वो टाई लूज़ करते हैं तो आप डाउनग्रेड हो जाती है आपकी। सो ऐसे मौके आए इस मैच में, इस टाई में, आई वुड से अगेंस्ट लिथुआनिया के, जहाँ लगा कि बस मैच हाथ से निकला? Definitely, there were some moments जहाँ पे obviously ये नहीं लगता, as a captain I didn't feel that we have lost the tie, लेकिन I would say कि वो दुख था कि we were not able to capitalize on our opportunities. पहला मैच अखील 3 सेट्स में जीता, he fought really well, unbelievable performance by him, 3 सेट में जीता। उसके बाद जिस तरह मैंने आपके साथ शुएब की बात की, nobody was expecting him to take the world number 80 to the third set and be in a position जहाँ पे वो मैच एक्चुअली जीत सकता है। It was on his racket, 4-1 up था थर्ड सेट के अंदर, but then he ended up losing 5 games in a row and he lost the set 6-4. तो जब वो पहले दिन पाकिस्तान won all था लिथुआनिया के साथ, it could have been very easily 2-0 also, and we would have been in the driving seat because हमारा doubles जो है हमारी strength है throughout our Davis Cup career. Second day पे पहला हमारा doubles का मैच था, we were a set down और break points down थे हम 2-3, and लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो bond है मेरा अकील के साथ, I knew I have to step up. ये पहले दिन अकील और शुएब दोनों stepped up and played unbelievable tennis. As a captain, I had to lift up my game, and अल्लाह के शुक्र से from that moment, I was able to raise my level and help Pakistan get the doubles win in 3 sets. And उसके बाद सारी seniority की बात थी, सारे दिल की, जज्बे की, passion की बात थी, जो मुल्क के लिए मेरे लिए अंदर भी बहुत है, अकील के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, and that is what took us over the finishing line. मेरे ख्याल से डिफाइनिंग मोमेंट जो थे आखिरी 2 मैचेस के वाज द टीम बॉन्ड जो हमारा है, पैशन फॉर आवर कंट्री, मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी था, एंड आई हैड टू पुट आवर 2 टॉप बेसिकली प्लेयर्स फॉर द लास्ट 2 मैचेस, इवन दो इट वाज वेरी हार्ड, क्योंकि अकील डबल्स खेला था अभी 2.5 घंटे का, उसके 15 मिनट के बाद ही हैड टू प्ले अगेंस्ट द वर्ल्ड नंबर 80, और उसके मैच के बाद आई पुट माई सेल्फ इन एज वेल टू प्ले सिंगल्स, जो मैं छोड़ चुका हुआ हूँ। Last year I took retirement. I told everybody I'm not going to play any singles anymore for Pakistan. लेकिन this time around I felt like पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है, and I have to go all out and give it my best. अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है that I was able to make an upset against junior number 20 जो वर्ल्ड में है, और विंबलडन का डबल्स भी जीता मेरे ख्याल से जूनियर विंबलडन का। तो या अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है जी, and I'm just very happy for ourselves, for Pakistan tennis team, and basically for Pakistan that we were able to create this history. क्योंकि अब डेविस कप के फॉर्मेट चेंज हो चुका है, नाउ इट्स नॉट एशिया ओशियाना, इट्स वर्ल्ड ग्रुप, सो वी कैन प्ले एनीबडी फ्रॉम द वर्ल्ड, यूरोपियन हो, नॉर्थ अमेरिकन हो, साउथ अमेरिकन हो। 2 साल पहले स्लोवेनिया आई थी, दे वर द बेटर टीम ऑन पेपर फ्रॉम अस, वी एंडेड अप क्रिएटिंग एन अपसेट। दिस साल भी लिथुआनिया आई है, दे हैव अ गाय हु इज टॉप 80 इन द वर्ल्ड, फॉर्मर टॉप 50, एंड वी एंडेड अप बीटिंग लिथुआनिया आल्सो, तो अल्लाह का बहुत बहुत कराना। बट हम जब बात करते हैं यंगस्टर्स की, आपने बात की, जैसे शुएब की आपने बात की, और आपको ऑप्शंस ऐसा ऐसे दिख रहे हैं, और ऐसे लड़के, इवन क्या टेनिस में पाकिस्तान की तरफ से लड़कियां भी ऐसी दिख रही हैं जो कि फर्दर ऑन वर्ल्ड लेवल पर जाकर जो हैं वो कम्पीट कर पाएँ? आई फील लाइक दे लैक सेल्फ बिलीफ। आई थिंक फेडरेशन भी, कोचेस भी उनको इतना बिलीव नहीं दिलवा सकते, और दिलवाया है in the past also. I feel like जिस इस दफ़ा शुएब खेला है, and I spoke to him during the match, before the match, after the match, all he kept saying was, "Asam भाई आपने मुझे इतना सेल्फ बिलीव करवा दिया था, आपने इतना मुझे सेल्फ बिलीव दिलवाया था कि I can beat this guy." And probably nobody else was thinking or even imagined me going through 3 sets, but you did, and you had that thing, and that's why I was able to take the match to the third set. I think self belief दिलवाना बहुत जरूरी है बच्चों को, जो कि we lack, maybe the coaches lack as well. And I think this is something really, really important. As a captain for the very first time, Davis Cup के लिए, all I wanted from my players was to perform at a level they have never performed at. और मुल्क के लिए खेलें, जज्बा लगा के खेलें. All I told them कि हार जीत का मुझे नहीं है. I just want to see you guys fighting on the court for Pakistan, not for yourself. And this is what I was able to see, and Alhamdulillah I was able to get out of them as well. क्योंकि जब भी मैं पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ, I give more than 100%. And this is what I wanted from my team as well. Well, alhamdulillah, everybody did that. And I can't be more proud of Akil Khan, Mohammad Shoaib, Mohammad Abid. And unfortunately, हमारे एक player टाई से एक दिन पहले he got COVID positive, Muzammil Murtaza. So feel very sad for him. But he was very encouraging. Also messages कर रहा था, phone कर रहा था, and was being part of the team. And that's the most important thing, especially when you're playing for Pakistan and representing the green flag.
As you said yourself, you've got few years left अभी भी और हमारी best wishes हैं आपके लिए. Of course, you had a pretty decent Australian Open as well. You partner with a Japanese player, if I'm not mistaken. So उन्हीं के साथ you will be partnering for the French Open as well, या इस साल बाकी tournaments भी उन्हीं के साथ खेलेंगे? हाँ जी, inshallah. Had a great start. Made 2 ATP finals, one in January, one in February. Alhamdulillah, playing really well. I'm really enjoying my tennis, actually, to be honest. Enjoying my life on the court and off the court as well, feeling a lot of energy and feeling stronger and feeling very motivated. I started playing this year actually with a player from Kazakhstan, and inshallah planning on playing in the future with him as well. And if, alhamdulillah, inshallah, if everything goes well, so French, Wimbledon and US Open be planning on playing with him. And abhi I'm taking a break after the Davis Cup. My body is totally shattered. बहुत थक गया हूँ मैं. And going to take a week off and then get back to training, and inshallah we'll be going to Europe then for the clay court season, French Open ke liye, for Wimbledon, and inshallah then the US Open. So 2-3 years you have said as a player. After that, Aisam, coaching क्योंकि ज़रूरत है. Pakistan tennis coaching, को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. I'm not sure about coaching part, but mentoring for sure. I'm planning on starting an initiative also, and to help the juniors and to help their somehow engage corporate sector into tennis as well, जो कि बहुत ज़रूरी है. And so far it's been a good response from the corporate sector as well. Very good. And in the very near future you will see some initiatives happening for tennis in Pakistan also, and not just cricket. And I feel like सारी sports को उतना ही मौके मिलने चाहिए स्पोर्ट्समैन को भी जितने क्रिकेट को मिलते हैं. I think like आप लोगों ने भी बात की, टैलेंट बहुत ज़्यादा है मुल्क में in every single sport, and I think as a player it's my obligation and duty also to groom them and to direct them in the right path. और जो गलतियाँ मैंने की हैं along my tours वगैरह वो ना करें. And because when I started playing at the professional level, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था पाकिस्तान में. So I feel like I have a lot of knowledge to guide the youngsters and inshallah take them to the right path and help them get a lot of dollars for Pakistan in the future, inshallah. ऐसा क्लीशे सा सवाल है एक, बट गुस्सा आता है बड़ा जब ये होता है कि नहीं जी यार सब क्रिकेट, एवरीथिंग क्रिकेट, यू ऑलवेज टॉक अबाउट क्रिकेट, मैं ये जीत के आ गया, मैं वो जीत के आ गया, टेनिस, पाकिस्तान टेनिस की कोई बात ही नहीं होती. नहीं जी, गुस्सा, to be honest, I'll be very very honest, गुस्सा कभी भी नहीं आया. I think cricketers deserve all the fame, 100%. एक ऐसी स्पोर्ट्स है जिससे पूरा सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का जाता है पूरी दुनिया के अंदर. And I'm never going to compare any sports पाकिस्तान में with cricket. It's the same thing. आप यूरोप में जाते हैं, एंडी मरे भी है और भी हैं, like football stars are always going to be bigger than एंडी मरे. इस तरह की चीजें जो है ना, मतलब कि आप उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, और ना ही मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ. All I feel like other athletes को भी, other sportsmen especially who are doing very well in their line, उनको भी उतने ही मौके मिलने चाहिए, उनको भी उतने ही स्पॉन्सर्स मिलने चाहिए to help them excel, and उनका जो पूरा पोटेंशियल है वो देखने को मिले, सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं पूरी दुनिया को. एंड मेन थिंग इज टू एट द एंड ऑफ द डे फ्लैग हमारा ही आता है किसी भी नाम के साथ. एंड जब भी वो कहीं भी किसी स्पोर्ट्स इवेंट पे आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है. एंड सेम थिंग इज विद द क्रिकेट. आई वॉच क्रिकेट, आई लव क्रिकेट. वी वेंट यस्टरडे आल्सो टू पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, मैंने अपने टीम को कहा लेट्स गो एंड बैक द बॉयज अप इन पिंडी हमारी डेविस कप की विनिंग के बाद. बिकॉज आई वॉज इन इस्लामाबाद में इतना बड़ा टेस्ट क्रिकेट हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया इतने सालों के बाद आई है. So I went there with the tennis team and to support them. Inshallah, I'm going to be in Lahore also, I think during the test match, Lahore, Australia ko jo hoga, Pakistan, Australia ko, and I'm going to make sure that I go and watch it for a day or two. So cricket se mujhe koi gussa nahi hai ji. It's all about the corporate sector, the media, to help promote other sports as well, and other sports, men and women as well.